landforms we have seen? Bhabhar, Tarai, Bhangar, Khadar, alluvial cone, alluvial fan and Bajara. Can you remember? So ये 7 को साइड में रखे और हमने अभी इरोजनल लैंडफॉर्म कर रहे थे और उसमें भी मैंने alluvial fan, alluvial cone बोला था मैंने और वहां पे बजादा नहीं बोला था बहादा. What I have said that? If you remember that, I have said. Hello? So I said that. क्या मैंने बोला? Yes, tell me fast. Bhabhar, Tarai, Bhangar, Khadar, alluvial cone, alluvial fan, and Bajada. And in case of erosional landform, deflation hollow, artesian well, mushroom rock. And then ventifex में ecanter, zwicanter, decanter, ecanter, zwicanter, decanter. Under the ventifex, yardang, zwigate. Then we have seen plateau, mesa, butte, pinnacle. And then we have seen cuesta. And on the plateau we have seen wadi, canyon. Understood it? Wadi means canyon. In the desert region or maybe in the semi-arid region, अच्छा, just tell me, कल भी मैंने बताया था फ्रेश वाटर में कितना सॉल्ट होता है? 0.5 ग्राम पर केजी, 1 केजी. सपोज यहां पर एक वाटर हमने यहां पे रखा, हाउ मच? यहां पे 2 केजी वाटर. व्हाट इज देयर? So in 1 kg में 0.5 gram, then the 2 kg. So how much salt in this water? 1 gram. इसमें से 1 kg water evaporated. How much left? 1 kg. और इसमें salt कितना बचा? 1 ही बचा. अच्छा, वाटर को भी evaporate कर दोगे? What? Salt को भी evaporate कर दोगे. Only water will evaporate and the salt will remain over there. And again then water comes in this region. And this time again 1 kg water come. Now how much it become? पहले 1 gram था, now 0.5 gram, so it become 1.5. Salt become, and water is how much? 2 kg. And out of 2 kg, 1 kg water get evaporated. And how much salt now? Again I said that there is 1 kg more can, 2 kg, and in the 2 kg how much? 0.5, 2 gram. दिख रहे हैं धीरे धीरे salinity of this pond or lake is increasing. You understand that how do the salinity of a pond or a lake where the evaporation is high? Let us see. There is I said that a region is having, suppose, surrounding hills. Have you gone to Pushkar? पुष्कर में नहीं गए? कोई बात नहीं, वहां पे हिल्स घेरा हुआ है. एंड लेकिन ये पुष्कर के एग्जाम्पल नहीं. आई सेड दैट, इसका मतलब यहां पर ये माउंटेन्स है, ये जो गैप है इसका मतलब गैप मतलब समझना यहां पर क्या है. अब ऐसे बना देता तो आपको पता नहीं चलता है ना कि इट इज इन अ माउंटेन्स और नॉट. सो देयर इज इन अ माउंटेन एंड व्हेन द रेनफॉल टेक्स प्लेस चैनल डेवलप्स. Yes, which kind of, it is towards the center or away from the center? So इसको कौन सा मैं बोलूंगा? Centripetal drainage pattern. Which pattern? Which pattern I said that? Centripetal. All the rivers are draining towards the center. सेंट्रीपेटल, क्योंकि ये डिप्रेस रीजन है और ये उठा हुआ रीजन है. इज इट ओके? और ये डेजर्ट रीजन है, यहाँ पे एवोपरेशन बहुत ज्यादा हो गया. देयर विल बी मोर एवोपरेशन.
एंड देन ध्यान से यहां पे पहले ध्यान से देखा, एंड दिस रीजन वाटर इज accumulating, it is becoming lake, and then slowly and slowly it will become which lake? Saline lake. Which lake? होगा. And this is known as what? This is saline lake, known as what? समझ में आ गया? राजस्थान, थोड़ा सा आई सेड दैट दिस इज इन इंडिया, एंड ये देख रहे हो आप, और ये क्या है? अरावली. एंड एक्चुअली में इफ यू सी दैट दिस इज द वॉल्नी सैंडल्स, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पास आप लोग, और दिस राजस्थान इतना बड़ा है, और आप लोग राजस्थान का नाम सुना नहीं कि आपने क्या बोल दिया? Desert. And then how much desert is there? Only this much. Clear? यहां पर जो सलाइन्स लेक है उसको बोलते हैं भांड. What it is known as? Yes. क्या बोलेंगे हम? Yes. और इधर थोड़ा सा फर्टाइल सॉइल है, लूनी रिवर एंड ऑल. इस रीजन में बोला जाता है सार. व्हाट इट इज नोन एज? SAR, सार. व्हाट इट इज नोन एज? सलाइन लेक को क्या बोलते हैं? सार. भांड एंड सार. कैन यू रिमेंबर? बट एक्चुअली वी पलाया लेक. समझ में आ गया? जोग्राफिकली वी आर नोइंग व्हाट इट इज इन अ लोकल नेम. Shall I remove? Yes. So आपने क्या देखा? Centripetal drainage pattern, and because of this what we have been able to see? Which lake? Saline lake. और यहां पर क्या होगा? If the rivers are coming, there will be what? Alluvial fan. There will be what? Alluvial fan or alluvial cone. There will be what? Alluvial fan or alluvial cone. This kind of structure. And when this is alluvial fan, आपको पता ही है क्या होता है? Finer particles. Alluvial cone, if it is, I said that, coarser particle. And when they coalesce together, it is known as, yeah. बजादा. क्या लिखवाया है मैंने? बहादा. ये डेजर्ट में कहते हैं इसे बहादा. So which are the 5 features we have seen? Centripetal drainage pattern. Yes. Palaya lake, alluvial fan, alluvial cone, and bahada. Which are the 5 features we have seen? दिख रहा है? Centripetal drainage pattern, centripetal drainage pattern, saline lake means playa, and then I said alluvial fan, alluvial cone, and bahada. Understood? Clear? And now we are going to see born hard. जो borny जो hard हो उसको क्या बोलेंगे? Monadnock is in a hard rock. इसको केवल समझने की कोशिश करिएगा, बनाऊंगा नहीं. And this is the last erosional landform which I said that. ये this is a hard rock and यहाँ पे regolith है, मतलब sediments come somewhere, come and deposited. So this hard rock has been underlined. Over the period this has been removed. तो मुझे क्या मिला? Only one hard resistant rock, और उसमें थोड़ा सा erode होगा, and this is known as what?
What is known as? समझ में आ गया? और it is known as Engelberg. इसको भी क्या कहेंगे हम? Engelberg. Understood? यहाँ पे वहाँ पे monodrock I have said. Engelberg. Hard, uplifted, isolated rock. Hard, uplifted, isolated rock या hard resistant. Hard को ही बोला जाता है जो कम eroded हो. Hard, resistant, isolated, uplifted rock. Born hard. Especially in South Africa. Especially hard, resistant, uplifted, isolated rock. Isolated का मतलब एक ही पीस रहेगा. जैसे Monadnock was also single piece ना. So, which are the landforms we have seen? Erosional landform. ये है. So what is the first landform? Fatafat. Yes, everyone keep quiet and then yes, tell me which are the landforms. Yes. Artesian well. Measure. Under the ventifex, which are the three? Ecanter. Zwicanter. Okay. After that, कोई दोस्त है आपका? Yardan. Dugan. फिर सर उस आपके दोस्त के बाल में जूत होता है, then what happened? कहाँ भागे आप? बोलो आगे. प्लेट्यू. एक पहला याद आ गया, उसके बाद रेगुलर कह सकते हो. प्लेट्यू, मेसा, ब्यूट, पिनाकल. और साथ साथ one I have said that one inclination horizontal cuesta or hogback, then wadi, and thereafter I said alluvial fan, alluvial इसको करें पहले. Alluvial fan, alluvial cone, bahada, centripetal dredging pattern and palaya, and then bone hard. और वो तो रिवर में मैंने बता दिया था. स्ट्रीम्स में आई सेड दैट भाभर, तराई, खादर, भांगर एंड alluvial fan, alluvial cone, बजादा. Understood it? And which are the types of desert on the basis of texture? Arg, Reg, Hamada. On the basis of temperature? Hot and cold. Hot कहाँ पे रहेगा? Subtropical, sorry, tropical and subtropical. Subtropical high pressure bed निकलता है, generally वहीं पे होता है. I said that it is clear. Now we are going to see depositional landform. यदि कभी आप all of you are belongs to what is in India, you know that little bit. हिंदी आप लोग जानते होंगे little bit. And if you go into the desert region और ऐसे sand will be deposited like this, तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? बालू का टिब्बा. Deposition of sand. It is uplifted like this. And इसको that is in English में बोलते हैं dune. So we are going to see dune. Depositional landform. We are going to see depositional landform, and these are, first I said that longitudinal dune, transverse sand dune. Next, I said that star dune,
Sand dune, both are same. Another I said that Barkhan, and these are deserts. These dunes are in the deserts. Okay. Now tell me a part of deserts where you will see sand in large amount. Huh? At the bank of river, large amount of deserts. I said sand. I said that. At the coastal region, beaches. Yes, sand beaches are there. So at the coastal. So another dune is coastal and it is known as parabolic dune, and it is forming at the coast. So we have to see 5 sand dunes. And this is longitudinal sand dune जिसको अफ्रीका सहारा डेजर्ट में इसको बोला जाता है सीफ, एंड इंडिया में ध्रियान, DHRIAN, longitudinal dune in Sahara known as S for Sahara, S for Sif. Acha, if I'll say in a competition Indians are there and in a competition foreigners are there, who will have more attention? Foreigner will have more attention or Indians will have more attention in the competition? Foreigner. और किसका ध्यान भटकेगा? वो